Okay. So, Gurari, we have completed yesterday. I have explained the meaning of anthropology, and I think I had given some portion of dictation. Can you just repeat what we have done yesterday? Ma'am, that notes is in my study hall, ma'am. Today I'm at home. Okay. So, how you would take the class then? Ma'am, I am writing in another book. Tomorrow I will copy this in that book. Achha, then it's fine. So, yesterday I have just, given text on meaning, scope, not scope, but मैंने meaning में आप लोगों को content दिया था, that how you people have to actually write SCERT का जो topic है, that I've told. आज जो मैं वहीं से थोड़ा सा start करूंगी. Two more topic there. Okay, that you people have to basically write it down. And I have given two questions. Can anthropology, holistic and comparative approach remain free from ethnocentrism, or will begin where with previous question. मैंने फीडबैक वाला आंसर आपका नहीं सुना था गुरारी एंड अदर स्टूडेंट्स जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, राइट? सो यू पीपल हैव टू जस्ट पुट आंसर्स. अब आप लोगों को एक चीज मुझे बतानी है. देखो, विल कंटिन्यू द टॉपिक. अभी आपको समझना है, अगर क्वेश्चन है कैन एंथ्रोपोलॉजी anthropologists holistic and comparative approach remain free from ethnocentrism. ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, एथनोसेंट्रिज्म, और उसके बाद डिस्कस क्रिटिकली. ओके, अब ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू पीपल हैव टू गिव आंसर्स ऑन इट. ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. You need to understand demand of the question. Okay, understand demand of the question. Okay, highlight keywords, help you to understand the demand of the questions, and definitely directives. Okay, so this is directive. Discuss critically is the directive. This is an approach. It's asking, can anthropology, holistic and comparative approach remain free from ethnocentrism? This is a keyword, holistic and comparative are other keywords, and this is a question. Okay? So over a period of time, I would explain to all of you how you people have to frame your answers. Okay? अब एथनोसेंट्रिज्म क्या है? देखो, मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, इसलिए दोज हु वुड बी वाचिंग मी, क्योंकि क्लासेस मैंने आजकल लाइव की हुई है, राइट? तो अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझे सुन रहा है तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल हैव द क्लैरिटी. ओके, एंड कीप टेक्सटिंग योर डाउट. क्लास के बाद आप लोगों के जो भी आप लोग डाउट्स लिखते हो चैट बॉक्स में, मैं उसको जरूर पढ़ती हूँ, एंड आई वुड ट्राई टू गिव आंसर्स. अगर क्वेश्चंस लाइक आई वुड से इफ क्वेश्चंस आर वैलिड. कुछ क्वेश्चंस मतलब डोंट माइंड, एस्पिरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है ज्यादातर, और वो हियर एंड देयर कुछ सुपरफिशियल नॉलेज लाके मुझे अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आई विल नॉट फाइंड इट एप्रोप्रिएट, आई विल नॉट आंसर. ओके, I'm an educationist and I do know what I am quoting, what I am explaining. आप शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के
यूट्यूब से पढ़ के आपको लगता है दैट यू कैन पोज अ क्वेश्चन, प्रॉब्लम इज नॉट क्वेश्चनिंग, द टोन ऑफ द क्वेश्चन and the way it is being asked is problematic. First of all, you need to be, you need to be in a situation where you are asking questions. If your questions are not genuine, I will not answer it. Okay, if you are thinking that, like any other YouTubers, I am promoting and I'm coming, no, that's not a case. All I want, that I know that there are some students who are going to take admissions on my name. They want to take anthropology, so they should be seeing मेरा classroom में मैं कैसे पढ़ाती हूँ. They should see to it. Okay, so this is not some YouTube promotion that what I'm doing. तो अगर आपके क्वेश्चंस में you're not asking genuine question and it is just a random question, you want to flow your superficial understanding that you are preparing for civil services, I will not answer. Okay, ask me genuine questions and in a respectful manner. Okay, I will answer it. Even there are so many students जो मेरे not mine but कंपनी के जो चैनल्स हैं उसमें अटैच्ड हैं और वो मुझे मेल करते हैं और मैं उसको आंसर करती हूँ. आई डोंट माइंड क्रिटिसिज्म, बट क्रिटिसिज्म हैज टू बी जेन्युइन. मुझे क्रिटिसाइज करना है या मेरी नॉलेज को क्रिटिसाइज करना है व्हाटसोएवर, देन यू शुड बी समथिंग एल्स. लेकिन ना आपको भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन इट वुड बी अ पॉजिटिव. अगर वो पॉजिटिव नहीं है, देन सॉरी, आई विल नॉट आंसर इट. नाउ लेट्स कम बैक to the question. So put your comment. If I will find genuine, I will answer it. If I will not, I will not even going to read it. मैं open भी नहीं करती. अब इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा. एंथ्रोपोलॉजी को आप फ्रेम कैसे करोगे? क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था, की टर्म्स होलिस्टिक एंड कंपैरेटिव. तो जब मैं अपना आंसर बनाऊंगी तो मेरे जो इंट्रोडक्शन होंगे, ठीक है, इन इंट्रोडक्शन मैं सिंक करूंगी विद द क्वेश्चन. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है मैंने भी हाईलाइट किया है आप लोगों के सामने. ओके, की टर्म्स और क्वेश्चन लिखवाया भी है, जो अगर पहली बार भी देख रहे तो वो भी समझ जाएंगे. भाई आई विल स्टार्ट लाइक दिस. Anthropology's holistic and comparative approach. Okay, aims to study, okay, all cultures equally, okay, and understand human diversity. ये बेसिक लेवल मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ. ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है. अब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को देखो. कैन एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक एंड कंपैरेटिव अप्रोच रिमेन फ्री फ्रॉम एथनोसेंट्रिज्म? थोड़ा और आप लोगों को जब मैं आंसर राइटिंग करते करते आपका थोड़ा लेवल और इंक्रीज हो जाएगा. आई थिंक जैसी बेसिक्स क्लास खत्म होती है, ओके, अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशनल कोर्स लेते हो तो यू वुड सी कि आपका पूरा 6 मंथ्स लगता है और उसके बाद भी टेस्ट पेपर्स वगैरह लगते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करती हूँ. बट इवन आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, स्टार्टिंग में जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें एक चीज मैं समझाती हूँ, दैट इज 7 C's ऑफ आंसर राइटिंग. तो दैट इज अ टोन. ठीक है, वो टोन लाने के लिए आपके पास पहले तो पूरे कंटेंट होना चाहिए, आपको पूरे सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, और आपका एक बार ही सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद आप एक यूनिक आंसर लिख सकते हो. अभी मैंने आपको 3 लाइन्स लिखवाई है, दैट इज बेसिक, बट बाद में मैं इसमें टोन ऐड कराती. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा है कैन एंथ्रोपोलॉजी, राइट, so I would have start with a case study, okay, human diversity, या फिर I would have start with some reference, David like Hume का जो है understanding diversity, okay, respecting diversity, so I would have started with this,
Okay, so I would have explained that definitely anthropology's central or focal point is to serve to humanity, and it does, and it implements by focusing, and it is possible only because of holistic and comparative approach. अब यहाँ पे मेरा tone है, right? In my answer is a tone. You can see के पहले वाला आंसर जो है वो बड़ा बेसिक है, अब यहाँ पे मैं टोन बता रही हूँ. अब ये टोन लाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेकिन टू बिगिन विद जो है ये क्वेश्चन होलिस्टिक एंड कंपैरेटिव अप्रोच, उसमें भी तो मैं ये कर ही रही हूँ ना. यू कैन सी एंथ्रोपोलॉजी holistic and comparative approach aims to study and cultures equally and understand human diversity. So people are just arguing कि पहले सिलेबस खत्म करो, फिर आंसर राइटिंग करो, टेस्ट करो. अप्रोच अगर आपको सही मिलेगा तो आप एक सही डायरेक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाला पॉइंट, फिर आई वुड डेफिनेटली टेल माई पॉइंट, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, there is always a gray, as Victor Turner argues that there is no two opposite binary oppositions. जो मीथिम्स में एलन ड्यून्स भी आर्ग्यू करते हैं, एलन ड्यून्स हो गए, लिवाई स्ट्रॉसे हो गए, गेनेप हो गए. these people are talking about two extremes. even कार्ल मार्क्स एक फेमस इकोनॉमिक्स है, आप सब जानते होंगे. these people are talking about extreme points, you know, that have or have not in terms in the language of कार्ल मार्क्स. बट ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में. ट्रस्ट मी, फिलोसफी और अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हासिल हो जाए हम लोगों को, राइट डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं. फिजिक्स का भी कुछ एक लॉ है कि जो दिख रहा है वो है ही नहीं. समथिंग लाइक दैट. आई डू नॉट नो, वन ऑफ माय कलीग वाज टेलिंग मी समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यू जस्ट हैव टू सी दिस पॉइंट दैट नेचुरल साइंस को अगर आप फिलोसफिकली समझोगे, यू विल सी दैट हाउ discipline like anthropology, sociology, history, political science, law is so beneficial for us, right? So you need to understand there is nothing too extremes we can talk about. Okay, तो अगर आपसे ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कैन एंथ्रोपोलॉजी भी, तो ये क्या पॉसिबल होगा? थोड़ा सा यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. तो यू विल से however it has not always remained free from ethnocentrism. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा डिबेट लिख दिया. However, it is not always free from ethnocentrism. Okay, so this is what I have given explanation. 2 से 3 थिंकर्स मैं यहाँ पे फिर कोट करती, राइट? बिकॉज यू नीड टू प्रोवाइड फैक्ट्स इन योर आंसर. ओके, आप कोई भी बात अपनी मन से नहीं कह सकते. यू नीड टू प्रोवाइड फैक्ट्स ऑन इट. इफ आई एम सेइंग दैट यस एम टू एंथ्रोपोलॉजी यही कर रहा है कि एथनोसेंट्रिज्म ना हो, बट ये पूरी तरीके से तो फ्री नहीं है. नॉट ऑलवेज रिमेन फ्री. Not always remain free from ethnocentrism. Okay? अब जब आप आगे पढ़ोगे एवोल्यूशन की थ्योरी, जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको देखा जाएगा that diffusionists have argued that evolutionists like Morgan and you know these people have put their development as superior. ठीक है, तो ये आर्गुमेंट्स है, पढ़ोगे तो आगे आएगा. बट मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि किस तरीके से बेसिक क्वेश्चन मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट जो क्लास 11 एससीईआरटी में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसको आपको कोई पीएचडी या एमफिल या यूजीसी नेट पर निकालना है. आपको तो यूपीएससी आईएएस में अच्छे से अच्छा रैंक लाना है. तो शुरुआत से ही मैं आप लोगों को ट्यून कर रही हूँ कि आप एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पढ़ो. डजंट मैटर कि आपने अभी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज नहीं पढ़ी. आई डोंट केयर, but I can explain it in my basic class only. कहानी है ना, थ्योरी है, उसको पढ़ो. यही तो काम है एक अच्छे फैकल्टी का, ये तो काम है एक एक्सपीरियंस टीचर का. ठीक है, ये नहीं है कि क्लास में पढ़ने से पहले दैट आई हैव डन. मैंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई पे लगा दी है.
अब बस मुझे इस तरीके से आप लोगों की जर्नी में हेल्प करना है कि आप लोग एक बहुत अच्छे से आंसर्स लिख पाओ। तो पहले ना ये नोशन हटा देना कि अरे ये तो हमको पता नहीं, मैम ये नाम कौन सा ले रही है, हमको तो पता ही नहीं है, व्हाट इज शी डूइंग। ट्रस्ट मी, हैव पेशेंस, यू नो व्हाट ट्रांसफर्स, और ये बिल्कुल सच बात है, सत्य है ये, व्हाट ट्रांसफर इज एनर्जी। अगर मैं सच्चे मन से करना चाहती हूँ तो ये आप तक पहुंचेगा, और अगर मैं छल कपट है मेरे मन में, थोड़ा सा भी छल कपट है, वो नहीं पहुंचेगा, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स हाउ आई वांट टू कन्वे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कन्वे कर दूंगी और बिल्कुल हो जाएगा, नहीं, आपके एफर्ट्स है, फिर वो आपकी भी तो एनर्जी डिपेंड करती है ना। आप अगर कोई एक फिक्स माइंड से ही मेरे चैनल पे आए हो और देख रहे हो तो वो भी मैटर करता है। Fine, so it's a vice versa. So do not worry about the thinker's name which I am now writing. Okay, you have not read, especially my classroom students who are with me right now. So you will now begin. जो आपने point बताया है उसको अब आप fact के साथ quote करोगे, right? अब बताओगे उसे. So early anthropologist like Edward Burnett Taylor, हेनरी मॉर्गन, ओके, इन लोगों ने काफी बढ़िया बुक लिखी है, ओके। व्यू सोसाइटी, viewed society changes or growing in a linear hierarchy. It is like it is going in this direction, like savage, then you become barbaric, and then you become civilized. Okay, so in a linear direction, okay, that is hierarchy. Placing Western societies at the top. ठीक है, अब यहाँ पे मैं फैक्ट बताऊंगी. दिस शोज क्लियर एथ्नोसेंट्रिक बायस, क्योंकि इन थ्योरी का क्रिटिसिज्म ही यही था. दिस शोज ethnocentric bias. Okay, you can see this is a difference between a high fetching answer. Okay, I'm just writing in a very simple answer. Okay, introduction maybe Sara point. I'm just going to write down here. Then you can write down although, क्योंकि ये क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट का आर्ग्यूमेंट था कि उन्होंने वेस्टर्न वैल्यूज को पुट किया था, बट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी ने इसको रिजेक्ट किया था. ऑल्दो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी रिजेक्ट, लाइक फ्रांस बोस, ऑल्दो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी rejects, okay, such views and promotes cultural relativism. Cultural relativism, keep writing answer. Completely objectivity is difficult because ये भी आपको लिखना है. कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डिफिकल्ट होता ही है. इसका कॉन्सेप्ट
मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन करा है, मैक्स वेबर वैल्यू रेलेवेंस कंप्लीट, इसमें मैं भी लिखवा दूंगी, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज challenging in social science to maintain. Okay, to maintain, because researchers can be influenced by their own cultural backgrounds. Now I'm writing this in different colors so that आप लोग बाद में इसको समझ लेना. वैसे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है, तो कोई एक आंसर है एक टॉपिक से होता ही नहीं है, ठीक है. तो शुरुआत में अब पहले तो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे और आप देखोगे कि धीरे 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 मैं आपको ट्यून और ट्रेन करती हुई जाऊंगी. अगर मैं पढ़ा तो रही हूँ मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट, बट मैं उसमें टॉपिक 8 भी ले आऊंगी, टॉपिक 6 भी, टॉपिक 7, टॉपिक 8, टॉपिक 9. अब ये कोई अगर कोई आई वुड से कि किसी को पता ही नहीं है कि एकेडमिक्स और सिविल सर्विसेज की जर्नी में आपको करना है क्या, तो आप ना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से घबरा जाओगे. क्योंकि जब आप हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप हिस्ट्री को फैक्ट्स देखते हो. हिस्ट्री is definitely defined as a chronological scientific study of facts, right? Chronological facts, but it is about society. It is about polity. It is about economy. It is so many things. You cannot understand history without understanding polity, economy, or society, or individual. आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते हो जब तक आप ह्यूमंस को नहीं समझ रहे हो. आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते, आप जूलॉजी नहीं समझ सकते, आप फिलोसफी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो डिविजन हमने किया है ना. नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ये तो कैटेगरीज हमने करी है, दैट्स व्हाट वी हैव डन. जब आप हाई लेवल पे जाते हो, डॉक्टरेट करते हो, व्हाट इज डॉक्टरेट, पीएचडी जब आप करते हैं, डॉक्टरेट इन फिलोसफी, राइट. तो सारे ही डिसिप्लिन को ऐड करके कोई आप काम करते हैं ना. So that's what I am trying to explain. इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पिंक कलर में लिख के बता रही हूँ, मैक्स वेबर. ओके, तो ये आपके रिसर्च मेथड्स में हम इसको समझेंगे. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया, वो पॉइंट क्या है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना मुश्किल है. अब ये बात यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड. व्हाट यू थिंक, यूपीएससी इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इफ आई हैव नॉट सबमिटेड माय वर्क. तो अगर डॉक्टर हुमा सर ने किसी आर्टिकल में लिखा है तो ही इट कैन एक्सेप्ट. और या मेरी पीएचडी का रेफरेंस आप डाल रहे हो या मेरा पोस्ट डॉक्टरेट का रेफरेंस बुक का डालोगे, तब तो वो इंटरेस्टेड है. लेकिन डॉक्टर हुमा हसन कह रही है, उनको कोई मतलब नहीं. तो ऐसे ही अगर आप XYZ पर्सन हो, आप ये बोल रहे हो कि सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक नहीं आप हटा सकते और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना मुश्किल है, तो आपको वो पॉइंट बताना पड़ेगा, राइट. हु हैज गिवन दिस थ्योरी. तो यहाँ पे by their own cultural background, as Max Weber in his work, you can say, okay, as Max Weber in his works like value neutrality, value relevance, and value freedom concepts
argues that researchers are not mere puppet, okay? They would have influence of their values in research, in their research. Hence, having no elements of ethnocentrism, hence having no trends of ethnocentrism, in anthropology, not possible. ओके अब ये वाला जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाया है, दैट इज द ओनली वे वी कैन फेच गुड मार्क्स. अब ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है. बट मैं शुरुआत से ही आप लोगों को एक डिफिकल्ट जर्नी के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी. अब समझ में आया बुडारी? Yes, ma'am. So you can just simply see that how we can write good answers like this. तो मैंने जहां से शुरुआत की थी अपने आंसर में वही टोन मेंटेन किया है. Is this clear? Yes, ma'am. Now the next question. Do field work and cultural relativism ensure objectivity in anthropology? Examine their limitations. Okay? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज आई वांट टू गो ऑन विद द अदर टॉपिक्स. ठीक है. और ये आंसर आपने मुझे दिया नहीं है गुडारी एंड अदर स्टूडेंट पीपल कैन जस्ट मेल इट टू मी. फाइन. ओके नाउ प्लीज कंटिन्यू द डिक्टेशन पार्ट. What was the last point which people have written? Have you written this paragraph? I do not know whether you have written. No, you must have not written. Okay, now continue the dictation part. So I am just reading it from the beginning. Yesterday I have just given this part dictation to you. Anthropology is a scientific study of human beings in their totality. And then I've explained what totality is. It seeks to understand humans not only as biological organisms, but also as creators of culture and members of society. The term anthropology is derived from the Greek word anthropos and logos. Okay. So unlike other disciplines, anthropology adopts a holistic approach, ensuring human life in all dimensions, biological, social, cultural and linguistic across time and space. Across time and space भी मैंने आप लोगों को explain कर दिया है. Okay, it studies both past, present human societies, thereby providing comprehensive understanding of human diversity and unity. Okay. Then I have explained the scope of anthropology is very wide as it covers different aspects of human existence. It is broadly divided into four main branches: biological, physical, deal with the study of human evolution, genetics and biological variation. It attempts to trace the origin of humans and understand how human beings have adapted to different environments. Then cultural anthropology focus on the study of culture, including beliefs, customs, and so on. Archaeological anthropology studies past human societies like that. Okay, now write down. पूरा एक पैराग्राफ के बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ है. Anthropology is characterized by certain distinctive features.
Anthropology is characterized by certain distinctive features, full stop. It is holistic in nature. Anthropology is characterized by certain distinctive features, full stop. It is holistic in nature. Comma, as it integrates different aspects of human life, as it integrates different aspects of human life into a unified study, as it integrates different aspects of human life into a unified study. Full stop. It is comparative, comma. Anthropology is characterized by certain distinctive features. It is holistic in nature, comma, as it integrates different aspects of human life into a unified study. It is comparative, comma, as it studies various cultures and societies to identify similarities and differences. As it studies various cultures and societies to identify similarities and differences. Right on. Fieldwork is another important feature, comma. Fieldwork is another important feature. Fieldwork is another important feature where anthropologists live among the people they study, to observe their way of life, directly. Full stop. This method helps in gaining an in-depth and unbiased understanding of different cultures. Full stop. Anthropology also emphasizes cultural relativism. Anthropology also emphasizes cultural relativism, comma, which means that culture should be understood, cultures should be understood in their own context, .
rather than being judged by external standards. Okay, so this is now we are going to understand. So I have already explained comparative, integrative, and holistic nature. This is I've taken little bit of changes from SCERT first chapter, meaning scope and development of anthropology. ठीक है? तो यहाँ पे anthropology is more than biosocial science. It has many other peculiarities. Anthropology on the other hand considers human life in totality. ठीक है? तो ये हम कल भी explain करा हुआ था मैंने. So you will see, in order to understand humans in their totality, anthropologists resort to unique method of ethnographic investigation. Ethnographic investigation actually it is intensive field work. Ethno मतलब होता है culture and graphics, so study. So हम क्या करते हैं? Anthropology has given this art to investigate and explore by using participant observation to all social sciences field. So anthropology से ये tradition गया है. So anthropology से basically sociology भी आया है. There are some students who argue कि मैम anthropology and sociology कैसे पढ़ा देते हैं? See, I am a social scientist. Okay, you would see this. Though अभी I have not got the degree, but I am a social scientist. मैंने जो research किया है वो social science में किया है. Yes, आपको कोई expertise तो लेके आना होता है. Okay, for example, अगर आप mathematics पे करें तो आपने natural sciences में मैथमेटिक्स पे आपने रिसर्च करा है. अब मैथमेटिक्स में करोगे तो आप उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिजिक्स भी आएगा और बहुत सारी ब्रांचेस को मिक्स करके ही आप कुछ काम कर रहे होते हैं. रिसर्च ऐसे ही होता है. अब उसमें आई वुड से एक्सरसाइज में तो चलो फिर भी कॉम्पोनेंट्स काफी सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, बट सोशल साइंस तो इट इज इंटरमिंगलिंग ऑफ ऑल द डिसिप्लिन, right? And sociology and anthropology, as by various anthropologists have argued, such as Karol, that how it is the twin sisters. आप sociology, it emerged in 19th century. उससे पहले तो anthropology था, जहाँ पे आप सोसाइटी भी समझ रहे हैं, इंसानों को समझ रहे हैं, उनका बिहेवियर समझ रहे हैं. Okay, in fact in India, first we had on the Department of Anthropology. So we do have accidental anthropologists, L.K. Krishna Iyer and S.C. Roy, who have studied some tribes under British power. They are also considered as sociologists. Okay, so ये दोनों एक सेम चीज है. तो जो ethnography है, जो कि I would say soul of anthropology, and which has been now taken up from all other contemporary disciplines. अब आप फील्ड में जाके रिसर्च करते हो, कलेक्ट करते हो डेटा. ओके, और सोशियोलॉजी इसको बहुत ज्यादा लाइक डीपली कर रहे हैं. अब एंथ्रोपोलॉजी पीपल नाउ कंसीडर दैट ओके इट इज अ स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल और द ट्राइबल पीपल, इंडिजिनियस लोगों को हम स्टडी करते हैं. नहीं, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दे बोथ कैन हैव कॉमन गोल्स टू स्टडी, little different. Okay, anthropology is more holistic in nature. If I'll talk about, it could consider all the dimensions, whether it is coming from biology, archaeology, geology, and so on, to understand any phenomena. Whereas sociology is more interested in contemporary problems, social problems. Okay, so they might study polity, but they would not go into descriptive way of explanation. Whereas anthropologists would do that. Okay. So यहाँ पे आप देखोगे कि anthropology of field science. Okay, so you will see there are a lot of differences. यहाँ पे what I have done, I have given some points so that you people can understand. अब यहाँ पे see this part. This is also in your PPT and in your book. Fieldwork is the backbone of anthropological research. Anthropologists use participant observation. तो इसको आप कहीं साइड में लिख लो क्योंकि ये जरूर इस पे 10 मार्कर्स क्वेश्चन आ जाता है. पार्टिसिपेंट मतलब मैं पार्टिसिपेट करूंगी. ओके, सो ये टेक्निक आई वुड से हर सीरियस रिसर्चर को आता है. प्राइमेटोलॉजिस्ट जैसे कि जेन गुडैल है, शी इज अ प्राइमेटोलॉजिस्ट.
वो पार्टिसिपेट करके चिंपैंजीज की लाइफ को स्टडी करके उनके बिहेवियर को बता सकते हैं, राइट? एनिमल्स को स्टडी करके उनका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं हम, पिजन्स, बर्ड्स, उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग. अब यू कैन जस्ट थिंक how I would participate with other animals, and it is humanly possible. How many of you know about this? There are people who talks to animals. आप कभी डिस्कवरी चैनल में अच्छा फिल्टर लगा के कंटेंट देखो तो आपको समझ में आएगा. अगर आप बड़े इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े फालतू के रील्स, आई एम सॉरी, गार्बेज आपके दिमाग में भरता जा रहा है रोज, ओके? या फिर बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कुछ भी देख रहे हो, ओके? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, see this kind of, mind blowing research around you where you can talk to animals, and it is very much possible, very much possible. You actually you emit, your body emits energy. It is a fact, scientific fact है, and you can talk to animals. अब देखो ना, कभी कभी आप जाते हो, you will see that animals stop and talk, ऐसा होता है. अब ये एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड अ डिफरेंट क्लास, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, मैं आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात बता रही हूँ. तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव डेटा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वेयर से एवर आई गो, अगर मुझे कोई एनिमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह दिखते हैं, मैं उनको बिहेवियर को स्टडी करती हूँ, उनका भी पैटर्न होता है, राइट? दे ऑल्सो ट्राई टू टॉक टू यू, एंड इट इज सो पॉसिबल. How? Because I in my mind was trying to understand that can I apply participant observation with other species? Yes, it is possible. क्योंकि जेन गुडाल नहीं किया है, जितने भी natural environmentalist हैं, okay, जो भी they are group who are working only for animals, species engendered now. How they are talking? They are communicating with them because of participant observation. Now just imagine that by using proper technique of participant observation, अब आपको तो रिसर्च करनी नहीं है, अदरवाइज मैं उसको पूरा डीपली आपको बताती कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते कैसे हैं. बट फिर भी आई वुड जस्ट सिंपली से उसके लिए डेटा होना चाहिए, डेटा भी राइट डायरेक्शन में. कौन से एलिमेंट्स को इग्नोर करना है, कौन से एलिमेंट्स पे फोकस करना है, वो एक्चुअली ट्रेनिंग के बाद आएगी. बट वो समझोगे आप कि किस तरीके से आप किसी की लाइफ को बहुत डीपली स्टडी कर सकते हो. एंड इफ यू पीपल हैव ऑब्जर्व एंड डिड दिस फील्ड वर्क, पार्टिसिपेंट्री ऑब्जर्वेशन करके आपने कुछ थोड़ा स्टडी करा और अच्छे माइंडसेट के साथ, कोई भी प्री कंसीव नोशन नहीं है दिमाग में. आप आज की इन टुडेज डेट आई कैन रीड पीपल, फैक्ट्स नहीं लिखूंगी, कंक्लूजन नहीं लिखूंगी उस इंसान के लिए विदाउट इवन विदाउट हैविंग डेटा. और वो डेटा एटलीस्ट 7 to 6 months, 1 year होना चाहिए. फाइन. तो यू कैन ऑब्जर्व, बट ऑब्जर्व करोगे व्हेन यू विल पुट योरसेल्फ इनटू देयर शूज. आपको उनकी जिंदगी जीनी है, सब कुछ उनकी नजरों से देखना है. तो दिस इज एन अप्रोच मार्विन हैरिस हैज गिवन, ओके, एमिकेनेटिक अप्रोच. इस पे यूपीएससी ने 10 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इनसाइडर व्यूज और आउटसाइडर व्यूज. Okay, so as a researcher, I will become like them only. तो जितने अच्छे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, उतने अच्छे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, और ट्रस्ट में आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग गुडारी? Yes, ma'am. You can actually predict, and this works universally. If I'll get a chance, I will write a very small paper on it where I can explain that how, if you have keen observation, and it also depends on your intention, आप किस way में intention apply करते हो. Okay, if you want to defame people around you, if you want to just show yourself that you are very perfect and all that, वो कहीं ना कहीं डीके होता है.
आई हैव सीन बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, लेकिन नाम सबका नहीं बनता है। तो अगर आपके ग्राउंड्स ठीक है, आपकी बेस ठीक है, you will reach, right? So as I am telling you that this technique you can use in your day-to-day life, okay? And you, if you are trained, you do not have to be just quiet, you have to participate. तो पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होता है that you know give your information, आप उतनी इन्फॉर्मेशन दो जो आपको अपनी लाइफ की देनी है, क्योंकि एज अ रिसर्चर अगर मैं इसकी जिंदगी में जा रही हूँ तो ये भी तो मेरी जिंदगी में आ रही है, isn't it? समझ में आ रहा है? Are you understanding? If you go to some place, आप किसी ट्राइबल एरिया में गए और आप उनकी लाइफ में स्टडी करोगे, आप भी तो उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस होगे, isn't it? They will also know about you. Are you understanding, Godari? Yes, ma'am. How you will see this? Because you are spending a lot of time. ठीक है? So that needs to be like seen. You just have to apply this method और आगे जाके हम participant observation को और बात करेंगे. अब I want to just train all of you again on this part कि किसी भी टॉपिक पे अगर मैं रुकती हूँ और मैं उसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो दैट इज शेयर इम्पोर्टेंट फॉर अस. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिवली इस पे क्वेश्चन आता है. तो आप लोगों को समझना है, यूपीएससी आईएएस एग्जाम इज नॉट अबाउट नॉलेज, it is also about how you are training your brain. Okay, how you are training your brain. You might think that today you might think that you are not good in answer writing, maybe you are not good in economics, or you are not good in writing, or quality आपका weak है. You can think like that, but you need to understand that it is only about wiring of your brain. Have you ever heard of the term neuroplasticity? Neuroplasticity simply refers that how your brain is wiring itself. So your current stage would not decide what you can be in future. You want to change yourself, change the input, change the wiring. Your brain do not know, what you repeat. It only knows you are repeating. So if you people are scrolling and scrolling and scrolling, you are distracted and you want distraction in your life. You need to go against your desires. So that's what I'm explaining, that you might think neuroplasticity और ये सारा point जो भी मैं आप लोगों को explain कर रही हूँ, it is not actually not very relevant for all of you what ma'am is talking about. You just need to understand this part. अगर आप लोग एक emotional way में इस journey को शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, वो starting में ठीक हो सकता है, but it is not going to give you any result. Your brain is not fixed. It is flexible. You should know about neuroplasticity. So what in this class I am doing? I am rewiring your brain. So you will understand anthropology advanced level का जब आपको anthropology समझ तो आए. So every time when I am reflecting on answer writing, every time, for example, participant observation, मैं बार बार पढ़ा रही हूँ. Why? Because I want your brain to make stronger connections. Okay, are you understanding this? Guys, I have a very severe throat problem. You won't believe, but I am taking my classes since early in the morning. I think some of my students know this. So 3:50 से मेरी classes start हो जाती है, and then I'm just working and working and working. Then I have a teenage daughter. So मेरा काफी hectic हो जाता है, and she is always on my nerves. She is always helping me कि मैं उस पे चिल्लाऊं, मेरा गला खराब हो. Why am I telling this? I am telling this that we'll continue, मतलब I'll continue after a break all this class. ठीक है? अभी तो you people have to listen क्योंकि अभी ये part finish नहीं हुआ है, but I have to take a break. Okay? So please remember
that your brain doesn't care आप क्या repeat कर रहे हो भाई, it wants repetitions. तो multiple times मैंने आपको अभी क्लास में एक्सप्लेन करे जा रही हूँ because I know that I will provide you content, I will provide you dictations, everything. So average content भी अगर किसी के पास है तो वो ये एग्जाम क्रैक कर लेगा. मेरा जो कंटेंट है it is from original sources. Okay, so please do remember, civil services is just not, it's not a test of knowledge, it is a test for brain training. आप कितनी जल्दी अपने आप को ट्रेन कर पाते हो. आप लोगों को ये समझना होगा, कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस दोनों ही चाहिए. Even if you feel I'm not good, okay, at remembering, or you can't focus, that's not permanent. Okay, this is just your current wiring. आप सब समझ रहे हो? And how you have to change it? Study 6 to 8 hours daily with focus. आपको फोकस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा 24 hours में, प्रैक्टिस करना होगा आंसर राइटिंग में. So slowly your brain adapts. First class of mind may be difficult, okay, second class become easy, और जो आज डिफिकल्ट लग रहा है कल वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा. बट यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन. और अगर इमोशंस कनेक्टेड है तो बहुत टाइम लग सकता है, बट कॉन्स्टेंटली यू हैव टू टेल योर ब्रेन नो, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग. आप बार बार अपने दिमाग को बताते रहोगे समथिंग इज रॉन्ग, ऑटोमेटिकली वन डे यू विल टेक अ राइट डिसीजन. तो जो टॉप रैंकर्स है दे आर नॉट बॉर्न डिफरेंट, ओके, बट वो अपने आप को डिफरेंटली ट्रेन कर लेते हैं. तो यू नीड टू स्टार्ट टुडे. ओके, आपको हमेशा, जैसे मैंने आपको भी समझाया, मैंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा, फिर मैंने एमिक एंड एटिक कहा, यहीं पे मैंने मेरविन हैरिस भी आया. अब इसमें कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, अरे मैम क्या बता रही है, ये तो एमिक एटिक पता ही नहीं. अरे रखो इसको, आई एम जस्ट गिविंग अ न्यूरॉन्स, यू नो, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू नेम्स इन योर ब्रेन. जब दोबारा आप अपने नोट लिखोगे, आप एमिक और एटिक देखोगे, कभी आपको ये समझ में नहीं आया, बन गया आपके दिमाग में कनेक्शन, ये क्या बोल रही है मैम. बस उतना ही करना है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इतना ही करना है. जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे, फिर आप देखोगे हाउ यू पीपल आर डिफरेंट, ओके, फ्रॉम अदर्स. So this is what is fieldwork is the heart and soul of anthropology as it is field science. It is a condition where the physical presence of anthropologists is considered mandatory. It helps to observe phenomena through one's own senses. During fieldwork, an anthropologist goes to the field, stays with the people. He is Malinowski, studying on fibroid islanders. The researcher has to wait until they occur. So researcher can utilize the techniques such as interview, case study, genealogy, and so on. बहुत सारे टेक्निक्स है. मैं पर्सनली अपने हर रिसर्च, मैंने अपनी जो रिसर्च किया था और आज भी मैं अप्लाई करती हूँ, एंड आई थिंक दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग टू ओपनली, मैंने कम से कम 200 टेक्निक्स ऑफ स्टडिंग पीपल एंड ऑब्जर्विंग पीपल सीखा हुआ है. ओके, मेरा 40 ही रिसर्च टेक्निक्स पे है आई वुड से. तो आप सोचो मैलिनोस्की जिसने एक चेंज ले आया था एंथ्रोपोलॉजी में कि हमको ऑब्जर्व, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली ऑब्जर्व, you need to do a participant observation. So कितने टेक्निक्स उन्होंने बताई होगी लोगों को रिसर्च करने के. इट्स अ कॉम्बिनेशन, कुछ सोशल साइंस से आता है, कुछ साइकोलॉजी से आता है, कुछ हिस्टोरियंस जो रिसर्च करते हैं वहां से आता है. तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं इनके, उनको यूज करके हो ही नहीं सकता आप लोगों को स्टडी ना कर पाओ, उनके पैटर्न को स्टडी ना कर पाओ. लेकिन ये सारे टेक्निक्स सीखने के लिए, करने के लिए, लाइक यू नो, देन यू आल्सो हैव सम एथिक्स. क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा, यू नो, फॉर एग्जांपल, इससे सम यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, मेडिसिन कैन हील पीपल, मेडिसिन कैन किल पीपल. अगर आपके पास बहुत नॉलेज है तो आप लोगों का भला भी कर सकते हो, और अगर आपके पास बहुत नॉलेज है तो आप बर्बाद भी कर सकते हो. माइथोलॉजी में वी डू हैव रावण. तो रावण के पास बहुत नॉलेज थी, लेकिन अगर वो समाज का अच्छा नहीं कर पाए तो वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग हिम. ओके, इसी तरीके से व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर दैट व्हेन यू वांट टू स्टडी, डू स्टडी इन अ डीपर मैनर. बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है
डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट कल्चर को स्टडी कर सकते हैं, एंड देन दे आर ओनली प्रमोटिंग ह्यूमैनिटी. दे डू नॉट वांट टू क्रिएट हेट्रेड. वो हर चीज में एथनोसेंट्रिज्म को खत्म ही करना चाहते हैं, क्योंकि एथनोसेंट्रिज्म, हेट, एंगर, जेलेसी, ये सारे इमोशंस है ही नहीं जिससे हम को एग्जिस्टेंस या सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई हैव फिनिश्ड दिस पार्ट, एंड आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक आई विल स्टार्ट मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ओके, विच मैंने उसका थोड़ा कंटेंट लिखवा दिया आप लोगों को कल की क्लास में, एंड देन विल कंटिन्यू दिस. So we can take 10 to 15 minutes ka break, and then we'll come on this. Meanwhile, yeah, because I do not, ek test मैं करवा चुकी हूँ. So meanwhile, you people can just take a break, little break, and then we'll continue. और उसके बाद आंसर राइटिंग सेशन दोबारा होगा, इसी के बेसिस पे मैं पढ़ाऊंगी, and I'll give a test.